Hello. Yes, am I audible? And my screen is visible to everyone? Hello, good morning. Okay, yeah. So I'm audible and my screen is visible to you all. Thank you so much for replying on the poll. Okay, good morning, everyone. So today we are going to start with the I am audible and visible. Okay. So today I'm going to start with the atomic structure lesson. Okay, we are going to do a crash course on this. Okay, let all join. Okay, let everyone join, and I will just wait for 1 minute as everything is set. Yeah, okay. So let's start with our lesson today, crash course. Okay, how are you all? Good morning. Let's take a dive in the atomic structure chapter. Okay. So today we are going to start with the simple first topic, that is what? Our subatomic particles. Okay, so as we are studying the structure of atom, so as we know that there are three subatomic particles present in this atom, right? So which are those? Electron, protons, and neutrons, right? Those are what? Electron, protons, and neutrons. And you must be knowing that who has discovered electron, protons, and neutrons. So electrons were discovered by J.J. Thomson, right? The charge on that electron is what? Minus 1.6 into 10 raised to minus 19. So this was the charge on the electron, and the mass of the electron is this much, that is 9.11 into 10 raised to minus 31, right? Next, the proton, the charge on the proton is this much, and the mass of the proton is this much, okay, 1.67 into 10 raised to minus 27. So as electron is negatively charged, the proton is what? Positively charged, right? And neutron do not have any charge on it, and the mass of the neutron is 1.67 into 10 raised to minus 27. So these subatomic particles were vastly discovered by using a very important model, that is what? Very important experiment, that is what? Rutherford's gold foil experiment. That is Rutherford's nuclear model of an atom. So here he has taken alpha particle emitter and he has incident that alpha particle on this gold foil. This is what? The gold foil, right? So on this gold foil he has emitted, okay, the alpha particle, and he has observed that the nature of the alpha particle is what? Different. He has observed that
ही वाज वो ऐसे सोच रहे थे रुदरफोर्ड कि जब भी वो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे गोल्ड फॉइल पे तो वो कैसे नेचर दिखाएंगे, इस तरह से नेचर दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि कुछ जो हमारे पार्टिकल्स थे, हमारा जो रेस थे, उन्होंने क्या किया, कुछ सीधे जा रहे थे इस तरह से एटम से, ओके, और कुछ पार्टिकल में से एक जो रे था उन्होंने क्या किया, इस तरह से इट गॉट बैकवर्ड्स, ओके, उनकी जो पाथ थी वो क्या हो गई, बैकवर्ड में चली गई। सो इन दिस वे ही हैज ऑब्जर्व दैट सम रेज वेर गोइंग from one end to directly to other end, they are reaching to the directly to the end of this atom, and one or two rays are bombarded on the center of the center of the atom, and then it is getting backward, okay, वो फिर से कहा जा रहे थे सोर्स की तरफ जा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि एटम जो है, एटम में क्या है, एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है सेंटर में जिसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस, और वहां पे क्या है, बहुत सारा मास है, और इस वजह से जो भी रे आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है। और एटम में ऐसा बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है जिस कारण जब भी कोई रेज आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स वहां पे इमिट हो रहे हैं, वो क्या जा रहे हैं, वो सीधे सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ही हैज कंक्लूडेड दैट इन द सेंटर देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, and which is a concentrated mass particle, and there is a very much empty space around that nucleus, okay. So the radius of the atom is around 10 raised to minus 10 meter, and the radius of this nucleus was around 10 raised to minus 15 meter. So that is what the Rutherford's experiment. Later on, we know that the nature of electromagnetic radiation. What is the nature of electromagnetic radiation? So this radiation spectrum you must have studied, okay. What you can predict from this electromagnetic radiation, what is the relation between energy, frequency and wavelength? From this electromagnetic radiation spectrum we can depict the relation between energy, frequency and wavelength. So all electromagnetic waves are moving with the same velocity in a vacuum, okay, and you must be knowing the velocity of light, that is what, 3 into 10 raised to, do you know what is the velocity of light? 3 into 10 raised to 8 meter per second, right? Everyone knows this. You can reply me in the chat, okay. You know the velocity of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second. So in this electromagnetic spectrum, as you have observed, what is happening for the frequency, what is happening for frequency? So here frequency, this region is low frequency region and this region is high frequency region. And for wavelength, what is happening? Wavelength, this is a lower wavelength and this is a longer wavelength, and this is the shorter wavelength. So from this, these are the our radiation regions, okay. Radio waves, microwaves, IR waves, UV rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays. So from this, what is happening? Frequency is increases. And what is happening to the wavelength? Wavelength is decreases. And what is happening to the energy? Energy also increases. So this electromagnetic spectrum gives us the idea about energy, frequency, wavelength, as well as we can depict the knowledge of wave number from this electromagnetic spectrum. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सो यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन सब को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये जो रिलेशन है हमारा एनर्जी, वेव नंबर, सॉरी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, एंड दैट रिलेशन इज व्हाट, C is equal to nu lambda. Velocity of light is equal to frequency into wavelength. Again, there is one more formula for this. You know that frequency is equal to what? It is C by lambda. I have just rearranged this equation. Okay, I have just rearranged this equation. Frequency is equal to what? C by lambda. Okay, and also we have one more equation, that is, I have told you that wave number. What is wave number? Wave number is nothing but the inverse of wavelength. So we can put this formula in this frequency equation, right? Nu is equal to C upon what?
1 by lambda is what? Wave number. So frequency is equal to C into our wave number, that is mu bar. Okay, is that clear to everyone? Everyone is getting this? Okay, so yes, everyone is getting this. Yeah, very good. So you are getting it? Yes. Okay, so now let's move to the next topic, that is what? Planck's quantum theory. So what does Planck has suggested? So Planck has suggested that when the radiant energy is incident on a given surface or on a given object, it is emitted in the packets discontinuously. Okay, it is given into the packet discontinuously into the small energy packets, and those energy packets are nothing but known as the photon or quanta, So he has said that the energy with which the radiation is going to, this radiation, electromagnetic radiation is going to incident on a given body is in the form of small pockets, not in a continuous manner. Okay, not in a continuous manner. They are going to reach to a body in a small packets, which is known as a quanta. And that's why he has suggested that the energy of that radiation will be directly proportional to the frequency of that given radiation. And this proportionality sign he has removed with the constant, which is known as the Planck's constant H, right? You must have heard this equation, E is equal to H nu. H is here what? Planck's constant, right? As we have seen here, this equation of frequency, what is that? Nu is equal to C lambda. So now what I can do, I can rearrange this equation like this way. E is equal to HC by lambda. Right? Is that clear to everyone? So this is what Planck quantum theory describes us, that when a body receives an electromagnetic radiation, it will not receive in the form of continuous way. It will receive that radiation in the small packets of energy, and that energy will be directly proportional to the frequency of the light which is going to incident on it, right? And this is the equation, that is E is equal to H nu, and frequency equation we know, velocity of light divided by wavelength, right? Wavelength of that radiation. So this is about Planck's quantum theory. Now let's talk about the next very important topic, that is photoelectric effect. So what is photoelectric effect? So when we have a metal bar, okay, since it is a metal bar, it consists of electrons. So what happens here? When a light incident on this electron, when a radiation incident on this electron on this metal bar, what happens? There is a ejection of electron. What is happening here? Ejection of electron is happening, and the kinetic energy of this ejected electron increases with increase in the frequency. Okay, and this effect is known as photoelectric effect. What is happening here? Due to the incident of photon, as we have talked about photon in quantum, Planck's quantum theory, he has suggested that radiation is coming into small packets, and what are these small packets are known? They are known as a photon. Okay, उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. So जब फोटोन हमारे मेटल बार पे इंसिडेंट हुए, मेटल में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब वो फोटोन और मेटल बार का इंटरेक्शन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? Ejection हो रहा है. And the kinetic energy of this ejected electron increases with increase in the frequency of electromagnetic radiation, and it is independent of the incident radiation, intensity of incident radiation. So this kinetic energy is directly proportional to the frequency, but it is independent of the intensity of incident radiation. Are you getting it? Is this clear to everyone? Yes? And somebody reply me, yeah, this is clear to everyone. Yes. Okay. So now let's move further for this photoelectric effect. As the intensity of incident radiation increases, what happens here? See. So as the intensity of incident radiation increases, the photoelectric current also increases. But what is happening? Photoelectric current increases, but the kinetic energy of this ejected electron remains same. What
what is happening here? The kinetic energy of the ejected electrons remains same. So how you can calculate the kinetic energy of the electron here? So here you can see the equation. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. We know this equation, right? So we have written this equation in terms of, h nu minus h nu 0. That is what? Energy, incident energy minus, this is what? The minimum amount of energy which is required to remove the given electron, which is known as a work function. Here, right? Is that clear to everyone? So work function of metal increases with increase in ionization energy. Okay, as the ionization energy increases, what is the ionization energy? It is the energy to remove the electron. So as the ionization energy will increase, the work function of a metal is again going to increase. So now let's solve. So is that clear to everyone? Yes, photoelectric effect. What is happening? Photon incidents on the metal bar. There is an ejection of electron, and those electrons are known as photoelectrons. And the interaction of photons with electron and ejection of electron, this is known as photoelectric effect. So now let's solve the problem depending upon this photoelectric effect. So here there is a quick question I'm asking you. Please try to solve this. Very simple question. In the photoelectron emission, the energy of the emitted electron is. So here there are 4 options given to you. Can you solve this problem? Yes. Can you reply me? In the photoelectron emission, the energy of emitted electron is. Yes. Okay. So the answer is what? Answer is C. What is happening? The kinetic energy of emitted electron is smaller than the incident photon. So here our answer is what? C. Okay, our answer is what? C answer. Okay, smaller than incident photon. So here kinetic energy, we have seen the equation just now. It is equal to the incident, okay, energy of the incident photon minus energy which is used to remove the electron. So that's why the photoelectron emission, the energy will of emitted electron will be what? Lesser than the incident photon, right? This is our kinetic energy. This is the energy of the emitted electron, and it will always less than the incident radiation, right? Next, the value of Planck's constant is. Here Planck constant value is given. The speed of light for us, speed of light is given, velocity of light is given, as well as we have given the frequency. And here we need to calculate the lambda. We have asked to calculate the wavelength. So what is the formula for this? We have just seen the formula. What is that formula? Nu is equal to, C is equal to nu lambda, right? C is equal to nu lambda. So now C is equal to nu lambda. So here what we have to calculate? We have to calculate lambda. Just rearrange this equation and we will get our answer. That is what? Let's put the value of speed of light and put the value of frequency. Very simple calculation. You will get the answer B, right? 50 nanometer. Is this clear to everyone? Everyone is getting this? Yes. Now let's talk about the next problem. Here the energies E1 and E2 of two radiations are 25 and 50 electron volt. The relation between their wavelengths, that is lambda 1 and lambda 2, will be. So here what is given? We have given two energies, E1 and E2, and we have asked that if lambda 1 is the energy for first radiation and lambda 2 is the second wavelength for the second radiation, okay, what will be the relation between them? So as we know the formula, E is equal to h nu, and what is that? Hc by lambda, right? Hc by lambda. So here E1 is equal to 1 upon lambda 1 and E2 is equal to 1 upon lambda 2. Are you getting this? Yes. So now what we have to depict, what we have to calculate here, E1
by E2, the relation we have to calculate. So here we can deduce from this that E1 upon E2 is equal to lambda 2 upon lambda 1. So as we have the E1 and E2 value, we can easily put them, right? 25 for what? E1, here in problem given 25 for E1 and for E2 50. So 25 upon 50, you will get the answer half, and from that you can easily calculate that lambda 1 is equal to 2 times of lambda 2. And what is the correct answer here? Answer is what? B. Yes, is it clear to everyone? Yeah, very simple problem. And such a type of problems, mostly problems are asked from this chapter, atomic structure. Okay, now let's solve this problem. The energy absorbed by each molecule of substance is 4.4 into 10 raised to minus 19 joule. Very simple problem. Here we have directly given the energy of the absorbed molecule, and we have given the bond energy per molecule, and we have to just calculate the kinetic energy. So kinetic energy formula was what? We have seen that energy absorbed minus energy. What is the energy? Bond energy. Okay, just simply put all the values, you will directly get the answer, right? You will directly get the answer in this way. Okay, per atom divided by 2, right? So here I have shown 4.4 into 10 raised to minus 19 minus 4 into 10 raised to minus 19. We will get the difference 0.4 into 10 raised to minus 19 divided by 2. Just divide it. You will get the answer 2 into 10 raised to minus 20. So the correct answer for this equation, for this problem is what? Option D. Yes, everything is clear to everyone? Yeah. Yes, please reply me. Yeah, you can reply me in the chat that this is okay, clear to you. Now let's move on to our next topic, that is Bohr's model for hydrogen atom. So Bohr was a scientist. He has suggested that electron revolves around the nucleus in a fixed circular path. What he has suggested, electron जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में कैसे घूम रहा है? फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है with a constant energy known as, with a constant energy, and that fixed orbit is known as what? Stationary orbit, which we can, in which orbit the electron is present, we can indicate that by principal quantum number. So एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? Next, the angular momentum of this electron is given by mvr is equal to nh by 2 pi. Please remember this equation. So mvr is equal to nh by 2 pi. Here n is what? Principal quantum number, whose values we can put 1, 2, 3. So as nucleus is the center and there are several orbits around the, there are several orbits around the nucleus, okay, nucleus, and there are several orbits around this nucleus. So when electron jumps from higher orbit, suppose here our electron, it jumps from higher orbit to lower orbit, it emits the energy. When it comes to lower orbit, it emits the energy. And when electron jumps from lower orbit to higher orbit, so here what happens? When electrons jumps from lower orbit, so this is the lower orbit to higher orbit, when electron jumps, what is happening? It absorbs the energy. जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और जब वो नीचे आता है लोअर ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, वेरी सिंपल, राइट? नाउ व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द electron present in the nth orbit? So the energy is equal to minus of E0 z square by n square. And what is this E0? E0, you can put this value in terms of joule, you can put this value in terms of electron volt, you can put this value in terms of kilojoule, and this value in terms of kilocalorie per mole. So most of the time you have seen this equation, minus 13.6 z square by n square, and here it is written electron volt per atom, electron volt per atom.
right? You must have seen this type of equation, electron volt per atom, right? Yeah, right. This equation is what in terms of electron volt per atom. So you can put any value of E naught here in terms of joule, in terms of electron volt, in terms of kilojoule, in terms of kilocalorie, and you can get that value. आपको किस वैल्यू में कैलकुलेट करनी है एनर्जी, वो आपको प्रॉब्लम में देखना है, और उस तरह से वो फॉर्मूला आपको यहाँ से यूज करना है फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. अगर आपको सेकंड ऑर्बिट दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, तो आप वहां से वो n का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड z इज व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एटम, right? Everything is clear right now. Now what is the radius of this nth orbit? So the radius of nth orbit is given by r is equal to r naught into n square by z square. And what is this r naught or r0? It is the Bohr's radius. So what is the value for that? In angstrom it is 0.529 angstrom, and in picometer it is 52.9, right? Next is velocity. What will be the velocity of the electron in this nth orbit? So this is what the velocity. So these are very important formula in terms of Bohr model. So please try to remember this. They are very, very important. As we are going to solve the problems, you will get to understand this concept very clearly. Okay. Most of the time atomic structure पे इसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? फॉर्मूला ध्यान में रखना है अच्छे से. Now let's solve some problems. So here you can see, according to Bohr's theory, the energy required for an electron in the Li2 plus ion to be emitted from n is equal to 2 state is. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है. अभी हम लोगों ने देखा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट क्या था, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो यहाँ पे ई नॉट हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ऑप्शंस में, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. व्हाट इज z, विच फॉर विच मॉलिक्यूल, Li मॉलिक्यूल. सो लिथियम का क्या है एटॉमिक नंबर z, and which orbit, n is equal to 2. So put all the values. What is the atomic number for lithium? Yes, here you can see I have solved this. 3, atomic number of lithium is 3, right? So 3 square 9 multiplied by 13.6 divided by 4, you will get answer minus 30.6 electron volt. But in order to write it, we write it in terms of positive value, that is plus 13.6, because we are supplying this energy, right? So that's why it is plus 30.6 electron volt in order to remove the electron, right? Everyone got it? Yes. Hello. Yeah. Now let's talk about the next problem. The energy of an electron in the nth Bohr orbit of hydrogen atom is. So now we have to calculate the energy of electron in the nth Bohr orbit for which hydrogen atom. So Z is equal to what? 1 here, and energy is whatever. Here 13.6 electron volt is the unit. So we just have to write down our formula, minus 13.6 Z square by n square. We have to ask to calculate for nth Bohr orbit. So what will be the answer? 13.6. Z का वैल्यू क्या है? 1 है. 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो क्या कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन, कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन विल बी ABCD में से कौन सा आएगा? ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन सी, राइट? वेरी सिंपल प्रॉब्लम. देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? यस या ओके. नेक्स्ट, बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच. द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट इज. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस कैलकुलेट करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम we can calculate by using the formula. You can see here what is the formula. It is equal to 0.530 angstrom हम लोगों को. Okay, so you can use the formula like this with the number of excited state क्या है यहाँ पे, n is equal to 2, and atomic number क्या है हाइड्रोजन एटम का? Z is equal to 1. So we know the Bohr radius formula. R is equal to n square by Z into Bohr radius, that is what? R0. तो हम लोगों को R0 की वैल्यू पता है, बोहर की रेडियस दी हुई है ना यहाँ पे 0.530.
2.530 प्रॉब्लम में दिया हुआ है, n की वैल्यू 2 दी हुई है और हमको हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, तो z की वैल्यू हो गई 1, 2 स्क्वायर, r0 का वैल्यू क्या है 0.530। सिंपल कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम ही रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम में एंगस्ट्रॉम दिया है, सो नो नीड ऑफ कन्वर्जन, डायरेक्टली तो मल्टीप्लीकेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? एवरीवन इज गेटिंग दिस? यस, very good. So now let's move on to the next topic, that is hydrogen spectrum. What does this hydrogen spectrum tells us? Yes, hydrogen spectrum हमको क्या बताता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम में, वो क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और वो क्या चला जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है, ऑर्बिट में चला जाता है। जब भी वो इलेक्ट्रॉन ground state में आता है, when it comes to the ground state, it emits some amount of energy, some amount of radiation, and that energy and radiation or the frequency of that light we can measure out by using this equation, right? ये यहाँ पे in terms of wave number हम लोगों ने equation लिया है, wave number is equal to 1 by lambda, that is what our wavelength, and that is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। n1 और n2 क्या है हमारे, एनर्जी लेवल से, कौन से लेवल में ये ट्रांजिशन हुआ है, और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस r? r is known as the Rydberg's constant, and this value is 109677 centimeter inverse. Okay, so the energy gap between these two orbital we can calculate it by using this equation, that is delta E is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So by using this equation we can easily calculate the energy gap, right? Now how we can calculate the total number of lines, spectral lines, we can calculate by using this equation, minus n2 minus n1। ओके, इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, हमको जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कौन से लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है, वो हमको अगर पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका सिर्फ डिफरेंस लेना है और वहां से हमको कितने लाइंस मिलेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now let's talk about the de Broglie wave equation. So what does this de Broglie wave equation indicates us? So it indicates us that the matter, okay, electron is what have particle nature as well as it has a wave nature. So lambda is equal to h upon p, where h is the Planck's constant, p is what, momentum, and the momentum value we can write in this way. So here this is the wave nature, wavelength. Okay, wavelength denotes the wave nature, and here velocity denotes the particle nature. So de Broglie wavelength has combined both the natures of electron, and he has come with this formula, that is lambda is equal to h upon p, that is equal to h upon mv. Okay, और अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है? ये इक्वेशन भी याद रखना है क्योंकि इस पे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है? सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल ऑफ q is associated with the potential, then this equation we have to use, right? Everything is clear? This equation is very important. Okay, for NEET level lambda is equal to h upon p, h upon mv, इतना भी आपने ध्यान में रख लिया तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो व्हाट डज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस? इट स्टेट्स दैट we cannot measure simultaneously what the velocity as well as momentum of a given electron. Okay, we cannot determine, this is not a velocity, this is what position, sorry, this is what position. We cannot determine the position, okay, position, as well as we cannot determine the momentum. Okay, momentum is what, velocity of a given electron very accurately simultaneously. हम लोग simultaneously इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बता सकते और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते. दैट इज व्हाट दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस अबाउट. सो डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. ओके, अगर हम इस इक्वेशन में p का जो वैल्यू है, p क्या है, मोमेंटम है, p का वैल्यू क्या होता है, p इज इक्वल टू mv. अगर ये पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, डेल्टा x इनटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन is greater than or equal to h upon 4 pi m. Okay, this is very simple equation. You must remember this. Now let's go to the problem. In the hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is in this way.
ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे बोहर रेडियस दिया हुआ है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। कैसे आएगी वो, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, सो दिस फॉर्मूला इज व्हाट, एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, हमको लैम्बडा निकलना है 2 पाई आर अपॉन एन, राइट। सो क्या है हमारी रेडियस, क्या है हमको दी हुई है रेडियस, यस हमको बोहर रेडियस दी हुई है प्रॉब्लम में, राइट। तो रेडियस क्या हो जाएंगे हमारी r0 इंटू एन स्क्वायर। कौन से ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार डिजिट्स नहीं दिए होते हैं, इस तरह से लिखा हुआ होता है सेकेंड बोहर ऑर्बिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r0 की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी r0 की वैल्यू 52.9 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, right? So simply put this value of r here and you will get the answer 2 pi by second orbit into 52.9 into 4. You will get the answer, right? Answer B. You will easily get this answer B. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ओके। n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r। देखो नीट में ऐसे प्रॉब्लम आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी, ओके। हम लोगों ने देखा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम क्या है, इक्वल है, मतलब पोजीशन और मोमेंटम दोनों की अनसर्टेनिटी हमारी इक्वल है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। सो लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। यू कैन सी हियर आई हैव रीअरेंज दिस इक्वेशन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मोमेंटम की वैल्यू पुट की, राइट, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों को, दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और आई कैन राइट m डेल्टा v इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दोनों सेम है, तो मैंने एक ही वैल्यू वहां पे लिख ली। तो अभी डेल्टा v क्या किया मैंने, यहाँ पे उनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया, स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, m को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया इस साइड, राइट। यू कैन सी दिस, m स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं पूछा है, तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसको अंडर रूट में डाल दिया, अपॉन 4 पाई m स्क्वायर था उसको मैंने बाहर निकाल लिया, m लिख लिया, और 4 को भी बाहर निकाल लिया, 2 लिख लिया। आई गॉट द आंसर 2m अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई, एंड विच इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। यस एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, yeah. Next, the momentum of particle having de Broglie wavelength is this much. So क्या हो जाएगा उसका मोमेंटम, तो बहुत इजी है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, एमवी को उधर ट्रांसफर कर दो, इस तरह से एच अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। एच की वैल्यू पता है आप लोगों को, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्बडा की वैल्यू पुट करो, दिया हुआ है, आपको मिल गया मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट, quantum mechanical model of atom. So what does quantum mechanical model of atom describes us? It tells us about the position of electron in a given, probability of finding the electron in a given atom, and it is, वो कहाँ से आया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। ये वेव इक्वेशन है, ये आपको याद में नहीं रखना है, ये सिर्फ वेव इक्वेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमको क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, ओके। और वो कहाँ से हमको मिलता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑल्सो व्हाट डज दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव अस, हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या पता चला है, वी हैव गेट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर n, l एंड m। ये 3 क्वांटम नंबर हम लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले, ठीक है। सो क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आर दीज n, l एंड m। So what is n? N is the principal quantum number which gives us the size and energy of the orbit. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में है, और जो ऑर्बिट है उसका साइज क्या है, वो हमको n के वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। और अगर nth ऑर्बिट होगा हमारा, nth ऑर्बिट मींस लास्ट ऑर्बिट जो भी होगा हमारा, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर। मतलब जब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 स्क्वायर, मतलब क्या, 1 ऑर्बिट, ओके। इफ अवर ऑर्बिट इज इन द सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 2 स्क्वायर, मतलब 4 ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। सो दिस इज s ऑर्बिटल, okay, this is 4s means what, s plus p,
एस में एक ऑर्बिटल होता है और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। सो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 4। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में इस तरह से एक ही ऑर्बिटल होता है और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2n²। अभी n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, तो मैंने कहा कि s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1, 2 1², मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। और यहाँ पे मैंने बोला n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर n इज इक्वल टू 2 है सो 2 इंटू 2² 2² क्या आ गया, 4, 4 इंटू 2 आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। आर यू गेटिंग इट? Very simple. Okay. Yeah. Now next quantum number is what, our azimuthal quantum number, which we denote by using L value. Okay. L is equal to 0, 1 to n minus 1. Okay. So n क्या है हमारा, principal quantum number, right? So the subshell of energy level is equal to n. तो कितने नंबर ऑफ सबशेल हमारे एटम में होंगे वो हमको पता चलता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। इट गिव्स अस द शेप एंड एनर्जीज ऑफ द सबशेल्स। ओके, ये हमको क्या बताता है, शेप क्या होगा वो ऑर्बिटल का, एज वेल एज वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट होगा, ये हम लोगों को समझता है। ओके, सो अगर L इज इक्वल टू 0 है तो हमारा शेप क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा और उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो वो p ऑर्बिटल होगा, उसका शेप डम्बल शेप होगा। अगर L इज इक्वल टू 2 है तो वो d शेल होगा, डबल डम्बल शेप। L इज इक्वल टू 3 है तो f ऑर्बिटल होगा, राइट। दिस इज अबाउट द azimuthal क्वांटम नंबर L, right? Its value is 0, 1 to n minus 1. Next, magnetic quantum number. So what is magnetic quantum number? It ranges from minus L to plus L including 0. देखो यहाँ पे क्या है, 0 भी आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। और टोटल नंबर ऑफ m इक्वल्स टू 2l plus 1. ओके, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodating in any shell, sub shell is 2 into 2l plus 1. Okay, so the magnetic quantum number signifies the orientation of orbital. ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे होगा और उसके हिसाब से हम लोग जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या करते हैं, एक्सप्लेन्स अस। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स अस these two very important effect. Stark effect is related to the electric field and Zeeman effect is related to the magnetic field. इतना ही आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है, ध्यान में रखना है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर जो है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ये हमको श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिला है। हम लोगों को सिर्फ 3 ही इक्वेशन मिले हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, द नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज व्हाट, स्पिन क्वांटम नंबर, विच सिग्निफाइज द स्पिन ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होते हैं स्पिन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, विच रिप्रेजेंट्स 2 मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स which are not at all derived from Schrodinger equation. See, I have written here. So maximum number of electron कौन से भी ऑर्बिटल में कितने होंगे, मैंने आप लोगों को बताया 2 ऑर्बिटल्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उनका स्पिन कैसे होता है, हम लोग इस तरह से शो करते हैं, राइट, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। ओके, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, राइट। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो भी इलेक्ट्रॉन का होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज एस हियर, एस इज अ स्पिन। स्पिन क्या होती है, वैल्यू हाफ हाफ, ठीक है, हाफ वैल्यू होता है स्पिन का, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सो द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज रेडियल नोड। ठीक है, ये नोड के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वांटम नंबर दिया हुआ है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, अजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है, और हम लोगों को पूछा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स that can be identified with the following quantum numbers, कितने हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो here answer is what, the orbital is what, 3p, right? So here number of orbitals identified, m is equal to 0 and that can be only 1, so plus 1 0 plus 1। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्बिटल डिटरमाइन की, कौन सी ऑर्बिटल होगी, 3p ऑर्बिटल होगी
इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप डायरेक्टली लिख लो। l का वैल्यू क्या है? 1 है। l का वैल्यू 1 है मतलब क्या है वहां पे? यस, अगर 1 0 है तो हम लोग बोलते हैं s ऑर्बिटल, 1 है तो हम लोग बोलेंगे p ऑर्बिटल। सो 3p, राइट? ओके, नेक्स्ट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये l प्लस 1 h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई। सो डायरेक्टली वो फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर p इलेक्ट्रॉन। तो l का वैल्यू क्या होता है? p के लिए 1 होता है। पुट करो वैल्यू, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l प्लस 1। ये ऑर्बिटल l का वैल्यू होता है 1, इजिली पुट करो। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 अंडर रूट ऑफ 2, और ये हमारा आ गया आंसर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन कौन से भी एक ऑर्बिटल में हम लोग जो रख रहे हैं, वो कौन से नंबर से डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं? यस, by using spin quantum number, that is plus half and minus half, right? Clear to everyone? 2 electrons occupying the same orbital should have opposite spin, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। दे विल डिफर इन देयर स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ let's talk about the radial nodes. So number of radial nodes when we have to calculate, it is equal to, formula क्या है? n minus l minus 1। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एंड 1 is the digit। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है the plane where the probability of finding the electron becomes 0 is called nodal plane, or it is known as angular node। ठीक है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन कितने होते हैं? l होते हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम देखेंगे, उससे आप लोगों को इसका आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हाउ यू कैन कैलकुलेट? n minus l, right? Now let's solve the problem. Orbitals having 3 angular nodes and 3 total nodes is, कौन से होंगे ऐसे ऑर्बिटल? बताओ बताओ। 6d, 5p, 3d, 4f। yes, can anyone tell me in the chat box? yeah, yes, can anyone tell me? तो ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोगों को दिए हुए हैं n minus 1। ठीक है, कितने नोड्स है हमारे पास? एंगुलर नोड्स 3 है, तो 3 इज इक्वल टू n minus 1। टोटल नोड्स हमारे पास एंगुलर नोड्स है 3, सो 3 इज इक्वल टू n minus 1। वहां से हम लोगों को n का वैल्यू मिला, दैट इज व्हाट? 4, राइट? 4 हम लोगों को वैल्यू मिला, और एंगुलर नोड से हम लोगों को क्या मिला? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिला, राइट? अब वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, और हम लोग सबशेल कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर व्हाट? 3 मतलब क्या डिनोट करता है? एफ शेल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल्स आर। 3p ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे? स्पेरिकल नोड्स बताइए। सो द नंबर ऑफ radial nodes in 3p orbitals will be n minus l minus 1, right? तो यहाँ पे कितने आएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा 1। सिंपल फॉर्मूला है, n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 1, 1 minus 1 is equal to 1 minus 1 is cancel। ठीक है, 3 minus 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमको आंसर आ जाएगा 1। So there are 2 types of nodes. Please note this. There are 2 types of nodes: angular nodes and radial nodes. Angular nodes are typically flat plane. Quantum number L determines the number of angular nodes, and radial nodes are spheres that occurs in principal quantum number. Okay, total nodes of an orbital is sum of angular as well as radial nodes, which is denoted by this formula. Okay, now let's calculate. Very simple problem is this. The number of radial and angular nodes in 4d orbital are respectively. तो बताइए, बोलो बोलो, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बता दीजिए मुझे क्या आएगा आंसर? यस, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा ABCD में से कौन सा आएगा? रेडियल नोड इज 1 and angular node is 2. Very simple. You have to calculate like this way. Yes, n minus l minus 1. Yes, now let's talk about the filling of electron in any given orbital. तो उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? अफोबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल, राइट? और यहाँ पे
जब भी हम कोई भी ऑर्बिटल्स देखते हैं, उनकी अगर एनर्जी सेम हो तो उन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लाइक डी ऑर्बिटल्स, देखो सबकी एनर्जी सेम है, 5 ऑर्बिटल्स है, लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं ना उनको। पी ऑर्बिटल्स को भी देख लीजिए, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन हम सेम इसी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। व्हेनेवर ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग सेम एनर्जी, दोस ऑर्बिटल्स आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो इन द ग्राउंड स्टेट, लेट्स टॉक अबाउट द अफोबो प्रिंसिपल. Whenever we have to fill the electrons, we have to understand these 3 principles: Apovo principle, Pauli exclusion principle, and Hertz rule. ठीक है, so in the ground state of atom, the orbitals are filled with the electron in their increasing energy. जब भी हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे कोई भी ऑर्बिटल में, वो इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी में फील करेंगे, पहले 1s में, देन 2s में, देन 2p, देन 3s, 3p इन दिस वे। ठीक है, ये हो गया हमारा अफोबो प्रिंसिपल। नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूल का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर एक अलग अलग होता है, एक का प्लस ऑफ होता है, दूसरे का माइनस ऑफ होता है। ठीक है, सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है वो सेम नहीं होंगे, एक क्वांटम नंबर अलग होगा, वो कौन सा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ने क्या बताया कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फील करेंगे in an any orbital, what is happening, pairing of electrons will takes place when the orbitals will be half filled. जब भी हमारी जो ऑर्बिटल है, अभी देखो 3 है ऑर्बिटल्स हमारे पी ऑर्बिटल में, तो जब ये तीनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद ही इसमें पेयरिंग टेक्स प्लेस होगा। ये हर्ट्ज रूल ने बताया। सो द एटम्स और आयंस विद हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर व्हाट, मोर स्टेबल। ठीक है, और क्या हमको पता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। द कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल। व्हाई दे आर स्टेबल? क्यों स्टेबल है वो? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी। राइट, हियर आई हैव शोन द एग्जांपल ऑफ क्रोमियम एटम। ओके, उनका मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, आप लोग देख सकते हो। आर्गन इज अवर नियरेस्ट नोबल गैस, 4s1 एंड 3d5। क्या है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, आपको पता है क्या है? इट इज 24। राइट, नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। फॉर azimuthal quantum number L is equal to 3, the maximum number of electrons will be, कितने आए जाएंगे यहाँ पे? L is equal to 3 means F shell, right? So the maximum number of electrons here will be 4l plus 2, that is total number of electrons will be what? 14. समझ में आ रही है सबको ये बात? Yes, any doubt? Okay, 4l plus 2, that is 4 into 3 plus 2, that is 12 plus 2, that is total electrons are 14. Now in a given atom, no 2 electrons have the same values for all the 4 quantum numbers. This rule is known as, yeah, कौन सा है ये रूल? बहुत इजी प्रॉब्लम है ये तो। ठीक है, the rule is what? Pauli exclusion principle, right? Next, the number of unpaired electrons in N2 plus is, कितने आएंगे N2 प्लस में? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, आप बता सकते हो मुझे? यस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज, यस, 7, राइट? सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p3। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकाले हुए हैं, तो 3 में से 2 चले गए, कितने बचे? 1। सो 1s2, 2s2, 2px1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए? ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। ठीक है, s ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल, p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड azimuthal क्वांटम नंबर L। हमको यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 2, azimuthal क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है 1। हमको कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये कैलकुलेट करना है। तो L is equal to 2 means what? ओके, 2 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L is equal to 1 means what? p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे है 2p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन p ऑर्बिटल आर हाउ मेनी? देयर आर 3 डब्बास। ओके, 1 2 3 4 5 and 6. So the maximum number of electron which can accommodate in this p orbital are what? 6. Okay, so our answer will be this one.
right? Any doubt? Next, an ion has 18 electrons in the outermost shell. It is, कौन सा आयन है जिसके outermost shell में 18 electrons present है? Yeah, tell me which will be that. So copper plus, उसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 29 माइनस 1 दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 29 क्या है? कॉपर का एटॉमिक नंबर है. प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, राइट, 3s2 3p6 एंड 3d10. तो ये हम लोग जब टोटल काउंट करेंगे बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो एवरीवन गेटिंग दिस? समझ में आया सबको? यस, एनी डाउट? ओके, ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर. ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना है. थियरी जो है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी है. ठीक है, ये थियरी आप लोगों ने रिवाइज कर ली. आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो गया. यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनकी शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. और आपको अच्छे तरह से इस प्रॉब्लम में जो भी आएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में वो आपको सॉल्व करते आएंगे. ठीक है, ओके, गुड. ओके, सो कल मिलेंगे हम लोग विद द नेक्स्ट लेसन. ओके, पायल, सुमेध, was this helpful to you? Can you reply me? You can reply in the chat also. Yes, प्रॉब्लम्स दिए हैं, सॉल्व कीजिए उनको अच्छे तरह से. ठीक है, या ओके, थैंक यू पायल, थैंक यू सुमेध. या यस, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो थ्योरी. आपको 100% इस चैप्टर पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आ जाएगा. ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है. अगर फिर भी आपको डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके.